variance of binomial distribution. Here we have binomial distribution of an experiment consisting n Bernoulli's trials. Okay, n Bernoulli's trials के experiment के लिए ही हमारे पास ये binomial distribution है. Here a random variable is x. X is for a number of successes. We have 0, 1, 2, 3 up to n successes. Okay, and here we have corresponding probabilities. Okay, now definitely sum of probabilities is 1. ये तो होता ही है. ठीक है, sum of these terms, this probabilities is terms of this expansion p plus q power n. P plus q is 1, so sum of probabilities is 1. Okay, then what will be mean of this binomial distribution? मीन को हम म्यू से एक्सप्रेस करते हैं. मीन म्यू इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई पी आई अपॉन सिग्मा ऑफ पी आई. मीन इज वेटेड मीन ऑफ वेरिएबल एक्स. ओके, उस वेट्स आर करेस्पॉन्डिंग probabilities. ये होता है ना. सिग्मा ऑफ पी आई इज 1, सो मीन इज सिग्मा ऑफ एक्स आई पी आई. ओके, कैसे निकालेंगे इसे हम? We will multiply these two values, corresponding values, and then add. Okay, हम इनको multiply करके add करेंगे. So we will have sigma of r multiplied by NCR p power r multiplied by q power n minus r, where r is equal to 0 to n. r is from 0 to n. ये होगा ना सम. इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो सिग्मा के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं. लेट्स फाइंड दिस सम. लेट्स यूज सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायनोमियल सीरीज. व्हाट इज r मल्टीप्लाई बाय NCR? इट इज n मल्टीप्लाई बाय n minus 1 CR minus 1. So we have n multiplied by sigma of n minus 1 CR minus 1 p power r minus 1 q power n minus r. We're taking p outside, p को बाहर ले लेते हैं. Okay, now this sigma is sum of terms of binomial expansion p plus q power n minus 1. ठीक है, ये जो सिग्मा है वो इस binomial expansions के terms का sum होगा ना. ठीक है, we have done this in binomial theorem. So we have np multiplied by this. p plus q is 1, so this is np. Okay, so mean of binomial distribution is n multiplied by p. Very important formula. N is number of trials and p is probability of success in each trial, which is constant. ठीक है, now let's find variance. Now we know the formula of variance. Variance of variable x is mean of x square minus square of mean of x. ठीक है, mean of variable x is, अभी हमने निकाला था, it is np. So we have here n square p square. Okay, now we have to find here mean of x square. Okay, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ये mean? Mean of x square means we will square these values. Okay, we will have 0 square, 1 square, 2 square, 3 square, r square, n square. Okay, then we will multiply corresponding values and will add. Okay, so this will be sigma of r square multiplied by NCR p power r q power n minus r, where r is from 0 to n. ये होगा ना सम. ठीक है, सिग्मा ऑफ पी आई इज 1. ठीक है, तो मीन ये होगा. हियर वेरिएबल इज एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये सम निकालते हैं. वी हैव टू यूज बायनोमियल थ्योरम अ लॉट. कैसे यूज करेंगे? r into NCR is n multiplied by n minus 1 CR minus 1. Okay, so r square NCR will be this. एक r हमने यूज कर लिया. This multiplied by p power r q power n minus r. Okay, now here we have r minus 1, here we have r. Okay, तो क्या करेंगे? Recall the concepts of
सीरीज ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन क्या करते थे, वी राइट आर एस आर माइनस वन प्लस वन, ऐसे लिखेंगे ना, ओके, दिस मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन सी आर माइनस वन p power r q power n minus r. Okay, now n minus r multiplied by this is, now we have this two values equal r minus 1, so this product will be n minus 1 multiplied by n minus 2c r minus 2 plus 1 multiplied by this, we have n minus 1c r minus 1 multiplied by p power r q power n minus r. So we have n minus 1 into p square multiplied by n minus 2c r minus 2 multiplied by p power r minus 2 multiplied by q power n minus r plus np, this multiply by this multiply by this, we have np multiply by n minus 1 c r minus 1 p power r minus 1 q power n minus r. Okay, now we apply sigma to this, हम इसको सिग्मा अप्लाई करेंगे फॉर r इज इक्वल टू 0 टू n, क्या होगा सम, when we apply sigma we will get sum n minus 1 p square multiply by p plus q power n minus 2, इसका जो सिग्मा है वो ये होगा, ओके, प्लस एन पी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ दिस विल बी p plus q power n minus 1. Now p plus q is 1, okay, so this will be n minus 1 p square plus np, ये होगा ना, ठीक है. Now we have to get the value of variance of x. This is value of mean of x square, okay, so variance of x will be this minus n square p square, okay, so variance of random variable x will be, let's expand this, we get n square p square minus np square, this plus np minus n square p square, n square p square gets cancel out, okay. From these two terms take np common, so we have np multiplied by 1 minus p, 1 minus p is q, so we have npq. So variance of random variable x of बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज npq, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक मीन का फॉर्मूला और एक वेरिएंस का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज के ऊपर आते हैं.